Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial, we shall talk about the origin and growth of international relations. आप सबका स्वागत है इस नई ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे और समझेंगे about the origin and growth of international relations. तो फिर चलिए शुरू करते हैं origin and growth of international relations. So before we begin with the topic, we need to understand that there are various stages of various eras of various incidents which has led to the origin as well as growth of international relations. So let us take the first very important point to understand the origin and the growth of international relations. In ancient time, Aristotle said, man by nature and necessity is a social animal. Well, a man who can live without other being is either a god or a beast. Well, Aristotle have rightly said that man by nature is a social animal, and it is because man cannot live in isolation. We as a human being need people around us. We need our family, we need our friends, we need our relatives. In fact, we need people around us because that will help us to develop ourselves in the composite society. So therefore Aristotle says that if a man who can live without other human being, then he must be either a god or beast. And frankly, we are not god nor we are beast. And therefore, we need to live in society. We need people around us. Similarly, in modern times, no nation or a country can live in isolation. Coexistence of nation is the order of the day, and therefore we need to understand that moreover, cordial relations and understanding among nations have become an important phenomena of modern life, and thus IR have assumed great pragmatic and academic significance in the present time. So therefore we need to understand that in modern time, like men cannot live in isolation, similarly in modern time no nation or a country can live in isolation. In fact, today's order of the day is very simple, that is coexistence. And therefore, if we need to coexist together in this world, then what we need is to have cordial relationships as well as we need to have some kind of understanding, especially among the nations, so that we can exist together, we can share resources as well as we can play a very important role. And therefore, because of this all modern phenomena, IR have assumed the great pragmatic, very practical value as far as academics is concerned, and therefore it has emerged as one of the most important discipline in present time. जब हम ओरिजिन और ग्रोथ की बात करते हैं IR की, तो सबसे पहले एरिस्टोटल का नाम आता है. सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था. एरिस्टोटल ने कहा था कि जो इंसान है वो अकेला कभी रह नहीं सकता. सिमिलरली, जब कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता तो इस मॉडर्न टाइम में जो देश है, जो मॉडर्न नेशंस है, वो भी अकेले नहीं रह सकते. कोई भी आइसोलेशन में रह नहीं सकता क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. सिमिलरली, जो नेशंस है उनको भी एक दूसरे की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए सारे देशों में एक कोएग्जिस्टेंस ही होनी चाहिए. अगर वो कोएग्जिस्टेंस बरकरार रखनी है तो कॉर्डियल रिलेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग जो देशों में होने चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और आज के तारीख में कॉर्डियल रिलेशंस और अंडरस्टैंडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना बन चुका है. और इसी तरीके से IR इंटरनेशनल रिलेशन को भी एक बहुत इम्पोर्टेंस मिला है. और इनफैक्ट आज के तारीख में बहुत से जो स्कॉलर्स हैं, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, वो IR को एक प्रैग्मेटिक तरीके से देखते हैं. ये एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसी के वजह से आज IR को एक बहुत इम्पोर्टेंट उपलब्धि मिली है जो बेसिकली टॉक्स अबाउट द रिलेशन अमॉन्ग द नेशंस एंड various other aspects of international relations. Moving forward, though IR as an academic discipline is of a recent origin, yet relations among nations were as old phenomena as history, because there were intertribal, intercity and inter-kingdom relations even in the ancient time.
such as ancient civilizations like Egyptian, Sumerian, Assyrian, Indian, Chinese, and Roman civilizations have evolved a distinct code of interstate conduct and a pattern of international relations. But in ancient world, international relation was international relations were incidental, sporadic, and limited in nature. So therefore, they were not global but merely regional in character. So, coming back to these second very important aspects of origin and growth of IR, we need to understand that yes, IR academically is very recent subject, but when we refer it among the nations, then we have a nations as old as phenomena as history. Now, what we need to understand here is that although IR is a very new paper or a new subject, but the relations among the nations are very old. In fact, way back 1,000 years, we never had a nation state, but we had some sort of a relationship among the different tribal communities, different cities, and in fact different kingdoms. And therefore, even at that point of time, there was interaction among the people, interaction among the tribal areas, interaction among the city states as well as kingdom. And just to name some civilizations, we have historical evidences wherein various ancient civilizations like Egyptian, Sumerian, Assyrian, Indian, Chinese, and Romans have had some kind of a code wherein they had an interstate conduct of their relationship. Although in ancient time, we also have to remember that all these relations at that point of time were incidental, they were sporadic, they were limited in nature. Because the way today we have connectivity, there was no connectivity in those days, and therefore the relationship was only incidental or limited. And thus, therefore, we need to understand that it was not global in nature the way it was today. Rather, in those days, it was merely a regional in character. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है ओरिजिन और ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, कि ये है कि जो आईआर आज हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ये बहुत नया डिसिप्लिन है, लेकिन जो देशों के जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत पुराने हैं. उस दौरान भले उस टाइम पे कोई देश नहीं था, लेकिन उस टाइम पर भी इन एंशिएंट टाइम लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी थी. जैसे एग्जांपल इंटर ट्राइबल कनेक्टिविटी थी, इंटर स्टेट थी, या फिर इंटर किंगडम थी. इसके अलावा हिस्टोरिकली बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर ये क्लियरली लिखा है और समझाया गया है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे उनके बीच में भी कुछ ना कुछ संबंध था. जैसे कि इजिप्शियन ले लो, सुमेरियन, एसीरियन, इंडियन, चाइनीज़ या फिर रोमन, इन सभी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में जो उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन मेंटेन किया था. और वो जो रिलेशनशिप था वो बेसिकली लिमिटेड था, वो आज की तरह नहीं है. आज की तारीख में हर एक देश, क्योंकि आज की तारीख में हमारी कनेक्टिविटी जो बढ़ गई है, इसके कारण जो सामान का जो आयात या निर्यात होता है, या फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, या फिर जो इकोनॉमिकली जितने हम इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट है किसी और देश के ऊपर, उस ज़माने में वो चीज़ नहीं थी. बल्कि उस टाइम पे जो उनका जो कांटेक्ट था वो कहीं ना कहीं एक इंसिडेंटल रहा है और लिमिटेड भी रहा है. और इसीलिए हमें समझना है कि उस दौरान जो ग्लोबल कनेक्टिविटी थी वो मेनली एक रीजनल कनेक्टिविटी थी, वो एक रीजनल लेवल के ऊपर था, ना कि जैसे आज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बन चुका है और सारे देश किसी ना किसी की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो दिस इज़ अ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ हाउ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैज़ origin and has grown over a period of time. Next we have is the period of Renaissance and Reformation. Well, with the Renaissance and the Reformation, IR assumed a new character. In fact, Renaissance was very hot and glowing period of European culture, artistic, political and economic. In fact, it is also been called as a rebirth of European culture, artistic, political and economic aspects. Well, generally described as taking place from the 14th century
to the 17th century. So basically the Renaissance and the Reformation period began from 14th century to the 17th century. The Renaissance promoted the rediscovery of a classical philosophy, literature, as well as arts. Some of the greatest thinkers, authors, statesmen, scientists, and artists in human history thrived during this era, while global exploration opened up new land and culture to European commerce. And therefore, Renaissance is credited with bridging the gap between the Middle Ages and modern day civilizations. So the next phase of origin or growth of IR is obviously Renaissance and Reformation, because this was this period which opened up a new horizon for European, and as well as it has a great impact on world politics of that time. So generally speaking, when it comes to Renaissance and Reformation, this began in the 14th century to the 17th century, and it was during this time that in Europe they rediscovered the classical philosophy, literature, arts, and in fact this was the same period where we have a great thinkers and authors and scientists as well as artists who contributed a lot to the evolution of a human mind as well as the philosophy of that time. This was again the same time which led to the global exploration phase, which not only opened up a new land as well as culture to European commerce, and this frankly led to that building the bridge, building the connectivity with the rest of the world. And in some way, some years down the line, Renaissance and the Reformation played a very important role of understanding the international relations of that time, and therefore Renaissance is rightly being credited for bridging that gap which connected the Middle Ages and the modern day civilizations. तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो फेज़ है इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ आयर का, वो है रिनासांस और रिफॉर्मेशन का पीरियड. ये जो पीरियड शुरू हुआ वो 14 सेंचुरी और 17 सेंचुरी के बीच में रहा. इस दौरान इस पीरियड में जो प्रमोशन किया गया क्लासिकल फ़िलासफ़ी का, लिटरेचर का, आर्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा रहा. उसका इफ़ेक्ट इतना रहा कि उस दौरान बहुत से थिंकर, बहुत से ऑथर्स, बहुत से आर्टिस्ट सामने आ गए और इन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक संदेश दिया. और इसी दौरान जो ग्लोबल एक्सप्लोरेशन भी शुरू हुआ, उसका बहुत फ़ायदा यूरोप को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को भी मिल गया. This was the same time when lot of explorers started going to the voyages. In fact, from India's perspective अगर हम देखेंगे तो इसी दौरान ब्रिटिशर्स भी हमारे इंडिया में आ गए और सबसे पहले वास्को द गामा भी आ गए. सो ये जो दुनिया थी वो पूरी दुनिया मतलब फुल ऑफ चैलेंजेस थी. लोग चैलेंजेस ले रहे थे दूसरी दुनिया ढूंढने के लिए, दूसरी जगह ढूंढने के लिए, और इसका फ़ायदा ये हो गया कि एक कनेक्टिविटी बन गई यूरोपियन कल्चर और बाकी कल्चर के बीचों में. और इसी तरह आगे चल के रेनेसांस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया फॉर ब्रिजिंग दैट गैप बिटवीन मिडिल एजेस और मॉडर्न डे सिविलाइजेशन. और इसीलिए रेनेसांस और रिफॉर्मेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ है जिस दौरान इंटरनेशनल रिलेशन का भी उदय हो गया और उसकी ग्रोथ हो गई स्लोली स्टेडली. आफ्टर Renaissance and Reformation, we have a next phase, that is the Peace of West-Phalia, which was signed in 1648. Well, after the Peace of Westphalia in 1648, statehood became an ideal unit of mankind. With this, territorial sovereign and a nation state emerged as a basic political unit and an effective actors in IR. Thus, modern IR began to grow in a paradoxical situation of independence at one side and interdependence on another side, separateness and closeness, individuality and mutuality, and therefore nationalism and internationalism. So these are the things which were discussed immediately after the peace treaty of Westphalia was signed in 1648, and this treaty eventually gave a birth to a new concept called statehood, because much before this there was no concept of statehood, nor there was a concept largely accepted as a nationalism. It was only after this when
the statehood became an ideal unit of a mankind. In fact, territorial sovereignty and a nation state gradually emerged as a basic political unit and an effective actor in IR. So, henceforth, after 1648, it was no more kingdoms, it was no more empires which were dealing with each other, but there was a rise of a nation state, there was a rise of a nationalism, there was a rise of a territorial sovereignty and political unit, which gradually started playing a very important role in international relation, and therefore, thus, in modern time, international relation began to grow in a very paradoxical situation. At one side, you have people who are fighting for independence, you have interdependence, there are issues of separateness and closeness. Here, this was a time when people started talking about individuality, and therefore, nationalism and internationalism achieved a great importance over a period of time. And later, to add this, industrial revolution led a considerable improvement in the means of transportation and communication, and therefore trade, transit and transaction between the nations became the order of the day. And therefore we need to understand that the peace treaty of Westphalia, or a peace of Westphalia, which was signed in 1648, became a most important turning point as far as the origin of IR in the modern time is concerned. ये जो पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसको साइन किया गया इन 1648, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसी के सिग्नेचर के बाद, ये साइन होने के बाद एक स्टेटहुड का नया उदय हो गया। ये जो आइडिया थी स्टेटहुड, ये पहले कभी नहीं थी, ये 1648 के बाद उसको एक शुरुआत मिली और ग्रेजुअली एक स्टेटहुड बिकेम एन आइडियल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, और आगे चलते हुए टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और नेशन स्टेट एमर्ज होने लगे, जो आगे बढ़कर बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर्स रहे आईआर में। और इसीलिए मॉडर्न जो आईआर शुरू हुआ वो वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में उसकी शुरुआत हुई। एक तरफ इंडिपेंडेंस के लिए लोग झगड़ रहे थे, दूसरी तरफ इंटरडिपेंडेंस का इशू चल रहा था। एक साइड में लोग सेपरेटनेस के बारे में बोल रहे थे और दूसरे साइड में इंडिविजुअलिटी के बारे में बोल रहे थे, और ऐसे चलते चलते आगे एक नेशनलिज्म का रूप आया और फिर इंटरनेशनलिज्म का रूप आया। तो इसीलिए जो वेस्टफेलिया जो ट्रीटी साइन की गई 1648 में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा आईआर के लिए, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद आईआर को एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव मिला और आगे चल के बहुत से ज़्यादा देशों का उदय होगा यूरोप में। सिर्फ यूरोप में नहीं, बल्कि ये जो आइडिया थी नेशनलिज्म, वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गई। और आगे चलकर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाया, और उसी की ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के द्वारा जो ट्रेड, ट्रांजिट और ट्रांजैक्शन हुआ करता था, उससे और देश एक साथ जुड़ने लगे, और यही मतलब ऑर्डर ऑफ द डे बन गया। तो इसीलिए पीस ऑफ वेस्टफेलिया बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, फेज है इन ओरिजिन ऑफ आईआर इन अ मॉडर्न टाइम। एंड लास्ट वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, that 19th and 20th century, which is again been said as a scientific and technological revolution century, further brought the nations nearer and closer. So all these developments made IR more regular, more comprehensive, more valuable day by day. In fact, the industrial and scientific innovations had their impact on war technology and armaments. Thus, the trauma of the First World War, together with the demand for a democratic control of a foreign policy, stimulated the public urge for a better understanding of foreign relations. Moreover, the issues of war and peace came to the forefront, and today all these developments attracted people's attention towards the growing importance of international relations and provided the ground for a creation of international relation as an academic discipline. So what we need to understand here, that gradually in 19th and 20th century,
because of invention in scientific technology and technological revolution. In fact, it brought all the nation more nearer and more closer than ever before. In fact, all this development made IR more regular and comprehensive subject because, as I said, IR is a multidisciplinary subject. It involves everything. Therefore, you cannot study IR only from one perspective. You have to see IR, international relations, from different perspective, and therefore it attracted more value as days went by or as day by day. In fact, industrial and scientific innovation had a great impact on war, technology, and armament, and that's a reality. Today, if we see the improvement and the impact which science and technology has on war and war technology, it immense, and therefore we need to understand that the trauma of the First World War actually played a very important role, and together there was a huge demand for a democratic control. Now people started understanding that the foreign policy, the international relations must be controlled by a democratic control, must be controlled by a democratic government, because one small mistake can lead to a hell. And therefore today's issues of war and peace has become a forefront issues for everybody, and therefore you must have seen everywhere people today are talking about war and peace. Those days are gone when states were like warmongering, they used to only go for a war, but today people are involved directly into the international relations, and therefore it has provided a ground for creation of international relations as a academic discipline. 19th और 20th सेंचुरी का दौर जो था वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दौर रहा, क्योंकि उसी दौरान साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ने लोगों को और नज़दीक लाया और एक साथ मिलाया, और आगे चल के हुए जो डेवलपमेंट हुए इंटरनेशनल रिलेशंस में, भले वो वॉर रहे हो या फिर कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हो या फिर इकोनॉमिक इवेंट्स रहे हो, एज वेल एज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स दैट बॉट इंटरनेशनल रिलेशंस एट आर डोर स्टेप, वो आज घर घर की कहानी बन चुकी है। आज हर एक दिन कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहा है, बोल रहा है। और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात रही यहाँ पर कि जो इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक जो इनोवेशन रहे, उसका जो बहुत ज़्यादातर जो इम्पैक्ट रहा वो वॉर टेक्नोलॉजी के ऊपर रहा और आर्मामेंट्स के ऊपर रहा, और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि हज़ारों के तादाद में वेपन्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए जा रहे हैं जिसको आप सोच भी कभी नहीं सकते थे। और इसी की वजह से जो इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कम्युनिटी का जो इम्प्रेशन रहा वो बहुत इम्प्रेशन बड़ा रहा। इसके अलावा जो लोगों ने ट्रॉमा देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये आज रियलिटी बन चुकी है कि अगर हर एक देश वॉर के लिए आगे बढ़ेगा तो एक ना एक दिन ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आज बहुत से लोग, स्पेशली डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले लोग, इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं। बेसिकली उनका जो कंट्रोल है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक गलती किसी ने कर दी तो बहुत बड़ी वॉर भी हो सकती है। एंड देयरफॉर टुडे, आज की तारीख में बहुत से लोग वॉर और पीस के बारे में बातें कर रहे हैं, बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, और इसी की वजह से आज बहुत से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। और इसीलिए आज इंटरनेशनल रिलेशंस ने एक ग्राउंड क्रिएट किया है लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन समझने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिमांड टुडे इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट academic discipline. So these are the very important issues or the phases which has helped IR to grow as well as to origin from ancient time to till the modern time. I hope you have understood the origin and growth of IR. I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.